In the previous video, we have completed the bones of forelimbs and hind limbs. And now in this video, we are going to learn the joints. हमें पता है कि जो ह्यूमन स्केलेटन है that is made up of two things, bones and cartilages. These bones and cartilages are attached to one another. And जो पॉइंट उसको उनको अटैच करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट्स. So joints क्या है? Joints is the point of contact between bones. This is one bone, tibia fibula. This is humeral bone. उनको ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट है that is the joint. Second is the point of contact between the two bones or the point of contact between the bones and cartilages. And that point is known as joint. Joint का क्या? Why they are essential? The joints are essential for the different types of movements and locomotion taking place in the body. Movements of the bony body parts. उसके लिए joints are essential. So first, अगर what is joint एक क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या होगा? तो joints are the point of contact. It is a point of contact between bones. First, second, it is the point of contact between bone and cartilage. दोनों को ज्वाइन करने वाला. So it's a point of contact between bones, two bones, or it is also the point of contact between the bone and cartilage. उसे हम कहेंगे joints. अब ये जो joints है, these joints are essential. क्यों है? तो it is essential for all types of movements, all types of body movements, body parts movements, and locomotion. So this is what the first important points regarding the joint. क्या है? तो joint is a point of contact between bone and cartilage. It is essential for the all types of body parts movements and locomotions. अब ये होने के बाद जो joints है हमारे बॉडी में, these are classified or grouped into three major groups. कौन से? तो हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है दे आर क्लासिफाइड इनटू द थ्री ग्रुप्स. कौन से? नंबर 1 फाइब्रस जॉइंट, नंबर 2 कार्टिलेजिनस जॉइंट, नंबर 3 साइनोवियल जॉइंट. तो कौन से है? These joints are further classified into the three groups. First one is fibrous joint. Second one is cartilaginous joint, and third one is synovial joint. So कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स, fibrous joint, cartilaginous joint and synovial joint. राइट. अब उसमें से फर्स्ट कौन सा? तो फाइब्रस जॉइंट. क्या है फाइब्रस जॉइंट? कैसा होता है? तो फाइब्रस जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फाइब्रस जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, कुछ भी मूवमेंट नहीं होती है. जहां फाइब्रस जॉइंट है वहां के जो बोन्स है दे डू नॉट शो एनी मूवमेंट because this type of joints do not allow any movement. जैसे कि हमने कहा था पिछले वीडियोस में, हमने देखे हैं स्कल बोन्स, 8 cranial flat bones है, and these are fused end to end. and जहां फ्यूज होते हैं उसे हम कहते हैं sutures, and they are immovable. So 8 flat cranial bones form the outer protective covering that is cranium, and उसके अंदर our brain is well protected. So
एट फ्लैट स्कल बोन्स, एग्जांपल कौन सा है? एट फ्लैट, कहाँ के? स्कल बोन्स. These bones show these types of joint, that is fiber. Because these eight flat skull bones कैसे है? They are fused. They fused end to end to end with the help of sutures. With sutures, and they are immovable, right? And these bones कौन से हैं? तो cranial bones. Cranial bones. These cranial bones क्या produce करते हैं? They produce the outer covering, and that is cranium cavity. क्या प्रोड्यूस करते हैं? cranium cavity. उसके अंदर हमारा बोन प्रोटेक्टेड होता है. तो एट फ्लैट स्कल बोन जो होते हैं, जैसे कि ऐसा, दिस इज वन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड. ये जो है ये सूचर्स, these are immovable. मूव नहीं होते. हमारा स्कल का पार्ट हम उसको नीचे ऊपर आगे पीछे नहीं करता. So this is the fibrous bones. First important, do not allow any movement. Examples: eight flat skull bones which fuse eight to eight. उनसे cranial bones क्या करते हैं? फ्यूज होके cranium cavity बनाते हैं. So these are immovable bones. Second one is cartilaginous bones. अब कार्टिलेजिनस बोन्स क्या करते हैं? तो फर्स्ट, कार्टिलेजिनस बोन अलाउ कौन सी मूवमेंट? अलाउ लिमिटेड मूवमेंट. अलाउ लिमिटेड मूवमेंट. जैसे कि पहले मैंने कहा कि जॉइंट्स का फंक्शन क्या है? तो जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स मूवमेंट. These cartilaginous joints allow limited movement. Right? अब कार्टिलेजिनस जॉइंट में जो दो बोन्स होते हैं, जो अटैच होते हैं थ्रू द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, दीज टू बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय अ कार्टिलेजेस. कार्टिलेज से अटैच होते हैं. तो सेकंड पॉइंट होगा, द बोन्स involved in this joint, in this joint, in this joint क्या है? they these bones, they are held together, they are held together by cartilages. Cartilage say they these two bones, for example these are the two bones and these joints together with the help of cartilaginous joints. तो ये जो bones है these held together by cartilages, right? Then कौन सा एग्जांपल्स है? एग्जांपल्स कौन सा है? कहाँ कार्टिलेजिनस हमारे बॉडी में प्रेजेंस है? तो हमें पता है कि वर्टेब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्री है. अब दो वर्टिब्री के बीच, फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज वन वर्टिब्रा, दिस इज सेकंड वर्टिब्रा. इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है, दैट जॉइंट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट व्हिच अलाउ लिमिटेड मूवमेंट. तो कहाँ होंगे? वर्टिब्री ऑफ, it is present in the in between adjacent vertebrae of vertebral column. हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री है, तो एडजेसेंट वर्टिब्री के दोनों के बीच में क्या है? तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स व्हिच अलाउ लिमिटेड मूवमेंट. तो दो हो गए. फाइब्रस डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. एक फ्लैट स्कल बोन, कार्टिलेजिनस अलाउ लिमिटेड मूवमेंट. कहाँ है? बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री ऑफ द वर्टिब्रल, adjacent joints between the adjacent vertebrae of the vertebral. Then third type is synovial joint. अब ये जो synovial joint है, it allows considerable movement. मतलब considerable ज्यादा से ज्यादा movement करने में these joints useful होता है. Second, presence of fluid filled cavity
is the characteristic feature of this joint. मतलब दो बोन्स के बीच एक फ्लूइड है, एक कैविटी है, इस कैविटी के अंदर फ्लूइड है. अगर फ्लूइड फिल्ड कैविटी है तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस synovial joint. And this synovial joint helps in all types of movements and locomotion. तो फर्स्ट वन इज क्या है? synovial joint क्या करता है? Allow considerable movement. This type of joint allow considerable मतलब ज्यादा से ज्यादा considerable movement. देखो we are doing comparison. फाइब्रल ज्वाइंट होता है तो डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है तो अलाउ लिमिटेड मूवमेंट. साइनोवियल ज्वाइंट होता है तो अलाउ कंसीडरेबल मूवमेंट. जब आप मेरे वीडियो देखोगे तो इट इज एंड टू एंड एनसीईआरटी. वही स्टेटमेंट आप नोट्स निकालोगे तो वही स्टेटमेंट होंगे, वही स्टेटमेंट नोटबुक एनसीईआरटी बुक में होंगे, एंड वही स्टेटमेंट आपको फाइनल नीट एग्जाम के क्वेश्चंस में मिलेंगे. So for that, these lectures are very important, right? So always do the comparison. Allow considerable movement. Synovial joint. Then synovial joint जो होता है क्या है? Fluid मतलब liquid. Filled. Fluid filled synovial cavity. उसे क्या कहेंगे? Fluid filled synovial cavity is characteristic feature of this joint. Right? For example, precisely, this is one bone. मैं यहाँ पे निकाल. This is one bone, and this is another bone. Right? अब इन दोनों के बीच में this is a cavity, and that cavity is known as synovial cavity. It is synovial cavity, which is filled with synovial fluid. Right? उसके अंदर क्या है? It is filled with synovial fluid, and this is the synovial membrane. यहाँ से attach synovial membrane, and this is synovial cavity. This is synovial membrane. Right? So presence of fluid filled synovial cavity. इस cavity को क्या कहेंगे? Synovial cavity. So presence of fluid filled synovial cavity अगर है तो that is the characteristic feature of synovial joint. Right? Second one is ये synovial joint काम क्या करता है? तो it helps in locomotion and movement, or you called it as movement and locomotion. And we in the first video of this chapter we learned the difference between the locomotion and movement. So this is right. अभी ये जो synovial joint है, this synovial joint is further classified into the further joints. कौन से? तो उनको हम learn करेंगे, study करेंगे. So first one is synovial joint. Right? अब देखो synovial joint के further, it is further classified into synovial joint. Number one, ball and socket joint. Ball and socket joint. Ball and socket joint कहाँ होता है? तो ball and socket joint is present between the glenoid cavity of pectoral girdle and head of humerus. यहाँ पे जो joint है ये वाला, it allows the 360 degree movement. 360 degree में movement देगा. So depending on the कितने डिग्री में movement होता है joint का, और यार वो joint कितने डिग्री में movement कर पाता है, depending on that is the ball and socket joint.
and ball and socket joints have in 360-degree moment. कौन सा कहाँ एग्जाम्पल कौन से है? एग्जाम्पल वन इज पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल, the joint between the कौन सी cavity, glenoid cavity of pectoral girdle and head of humerus. कौन सा है? तो ball and socket. सेकेंड एग्जांपल कौन सा है? सेकेंड एग्जांपल इज pelvic girdle. Pelvic girdle and head of femur bone. This type of joint कौन से है? तो ball and sockets. Right? That is the first. Second one is hinge joint. Second is hinge joint. अब hinge joint मतलब कौन सा है? तो hinge joint मतलब elbow joint. यहाँ पे जो है elbow joint and legs को knee joint. So these are the examples of hinge joints. Only one है ऊपर जा सकता है, only ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जा. Knee भी due to the presence of patella. तो पटेला बोन ने क्या किया है? जॉइंट को कवर किया वेंट्रली वेंट्रल साइड से. तो हमारा लेग सिर्फ नीचे जाता है, सिर्फ नीचे जाएगा. एक एक वन बोन एंड दिस इज दूसरा वाला बोन. यहाँ पे नी जॉइंट है, ये सिर्फ नीचे जाता है, ऊपर नहीं आता. ये बोन नीचे जाता है बट कैन नॉट मूव अपसाइड. राइट? सो दिस इज हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट कौन से है? हिंज जॉइंट इज फर्स्ट elbow joint, elbow joint, and second one is knee joint. Second is knee joint. Right? अब हमें पता है कि elbow joint कहाँ है? Elbow joint is present between the humerus and radius. Right? ये ऐसा प्रोसेस है, ऑलिफ्यूम प्रोसेस है, तो इसको नीचे नहीं जाने देता, सिर्फ ऊपर. तो दिस इज एक नी जॉइंट में भी वैसा है. फीमर एंड tibia fibula, presence of knee cover by a patella. Then third one is the gliding joint. Gliding joint. अब ये जो gliding joint जो है, the joint present between the carpals. कहाँ पर? Between carpals. कार्पल्स मतलब रिस्ट रीजन में जो बोन्स है. कौन से रीजन में? रिस्ट रीजन में जो बोन्स है उनको कार्पल्स कहते हैं. कितने हैं? तो टोटल 8 है. तो कैसे है? लाइक दैट दे आर स्लाइड ओवर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं. फर्स्ट दे स्लाइड ओवर, they have the gliding. Right? So gliding joint is present between the carpals. That is the gliding joints, and these bones slide over, एक दूसरे के ऊपर slide over. Last one is saddle joint. Is saddle joint, and saddle joint कहाँ है? Saddle joint is present between the carpal and metacarpal of thumb. Carpal and metacarpal of thumb. Carpal and metacarpal of thumb. कहाँ पे? ये रीजन. This is carpal and ये जो thumb वाला जो है palm region वाला, this is metacarpal. So carpal of wrist and metacarpal of the thumb जहाँ पर है that is saddle joint. Right? और एक joint है that is the pivot joint. And that pivot joint is specifically present in the first and second cervical vertebra. अब हमें पता है कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन सा है? एटलस. सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन सा है? तो एटलस. तो पाइवोट जॉइंट कौन सा? लास्ट. पाइवोट कहाँ है? बिटवीन एटलस एंड एक्सिस. एटलस क्या है? तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, इट इज फर्स्ट सर्वाइकल. एंड एक्सिस क्या है? तो इट इज second cervical. Right? So in between atlas and axis there is a joint situated as pivot joint. अब एक joint है जो between the carpals and metacarpals which allow the movements this
this, this, and that is known as angular joint. So last उसके बाद का जो होगा that is angular joint. आपके स्टडी में सिर्फ इतने ही हैं angular joint between carpals and metacarpals. Between carpals and metacarpals. Angular movement देता है carpals and metacarpals. So this is this side, this side, this side, this side. That is the angular movement. Saddle joint only the carpal and metacarpal. Only the this is actually it is the ball and socket जैसा, but it's a false ball and socket. It's ज़्यादा नहीं, right? ज़्यादा नहीं है. So this is the joint. अब देखो joint का काम क्या है? तो joint helps in the movement, locomotion. So in such cases, the joints work as a fulcrum. Joints क्या काम करते हैं? तो joints work as क्या काम करते हैं? fulcrum. fulcrum मतलब सपोर्ट. जब हम लोकोमोशन करते हैं, जब हम मूवमेंट करते हैं, तो ये जो जॉइंट होता है दो बोन्स के बीच या बोन एंड कार्टिलेज के बीच, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में फुलक्रम करके एक्ट होता है. तो जॉइंट्स आर एक्टिंग एज अ फुलक्रम. फुलक्रम मतलब सपोर्ट करना, राइट? किसी को आधार देना. तो जॉइंट का वो काम है. So here we have completed the joint fibrous, cartilaginous, synovial. Ball and socket, hinge joint, gliding joint, saddle joint, pivot joint, and last one is the angular joint. In the next video, we'll discuss the disorders of skeletal system.